ગુજરાત બોર્ડ છે સીબીએસઈ ને ફોલો કરે છે, પણ સીબીએસઈ સિલેબસ રિડ્યુસ કર્યો છે, ગુજરાત બોર્ડે નથી. હેવિંગ અ મીટિંગ અબાઉટ ધીસ, બટ વી હેવ ટુ કન્સિડર ધીસ કે કદાચ રિમૂવ બી કરશે તો આપણે બોર્ડમાંથી કરશે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નહીં. તો આપણે તો કરવું જ પડશે. સીબીએસઈ નું 2 યુનિટ થઈ ગયું. હા, 2 બોર્ડ કમ એકદમ હા, તો હું ભણાવું છું, ક્લાસમાં આવે છે સ્ટુડન્ટ. એટલે હું ભણાવું છું, મને ખબર છે. મારા ક્લાસમાં સીબીએસઈ ના સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે. પહેલું યુનિટ એમસીક્યુ છે, સેકન્ડ એમસીક્યુ માં સબ્જેક્ટિવ છે. યસ, સો we'll take these optical instruments. Bit tough, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत सारी आएगी, फॉर्मूला बहुत सारा आएगा, और ये चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल से अराउंड 40, उसमें से आधे तो क्वेश्चन ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ही दिए हैं. सो यू हैव टू कंसीडर दिस. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड, लेकिन उसका बेसिक पढ़ा था, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है इसका. इसमें सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास. सिंपल कि आप कोई चीज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो, then you have to use that particular lens which gives you the magnified image, and that magnified image is produced by a convex lens. So when you use a single convex lens, it becomes a simple microscope. कैसे करता है, कहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करता है, for that being you know the image formation cases by convex lens. ये कहीं एक्स्ट्रा नहीं, एમાં કોઈ rocket science नहीं. जो कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की केसेस है वही कॉन्वेक्स लेंस के हैं. बराबर, कि वो मेरे को ये बताएगा कि इन विच केस अ कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस, સાંભળજો પછી આન્સર આપજો. In which case a convex lens produce a virtual and erect image which is magnified. એક જ કેસ છે, સિંગલ કેસ in which a convex lens between P ના આવે. It is between focus and optical center. जो concave mirror में between pole and focus था, वो यहाँ पे between optical center and focus. जितने भी लेंस आपने देखे हैं उसमें एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है. अदरवाइज कॉन्केव के लेंस कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट इमेज, बट वो मैग्नीफाई नहीं करता है, वो डिमिनिश कर देता है. अवर रिक्वायरमेंट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, उसी से नाम उसका मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ है. वी वांट मैग्नीफाइड इमेज, बराबर. So that's why we have to use that case in which the object is placed between of optical center and focus of a convex lens. So this is the reason why in case of magnifying glass a convex lens is used. This is your general knowledge. अगर आप कहीं पे वाइवा देने जाओगे तो ये पूछेंगे आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंसेज क्यों यूज का है, व्हाई द कॉन्केव लेंस इज नॉट यूज्ड. तो आपको बताना है कि ये एक केस है जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है. नाउ हाउ इट इज यूज्ड, दैट वी आर गोइंग टू सी. वो कैसे यूज करता है, तो उसके लिए आपको एक डिस्टेंस का नाम पता होगा, आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. नियर पॉइंट और फार पॉइंट ऐसे दो डिस्टेंस आते थे. तो आप एक पॉइंट करके लिख दीजिए, फिर मैं आगे थियरी करवाता हूँ. नियर पॉइंट ऑफ एन आई, આવે છે અવાજ? નિયર પોઈન્ટ ઓફ એન આઈ, it is the minimum distance, it is the minimum distance up to which, it is the minimum distance up to which an eye is comfortable, an eye is comfortable to see. eyes લખો તો બી ચાલે, આપણે બે આંખથી જોઈએ. So eyes are comfortable to see, right? You know range, लिखिए इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. जनरली नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है. પછી તમે ગ્લાसेस यूज करता हो, चश्मा પહેરતા हो, तो इट मे बी डिफरेंट. नॉर्मली इट्स 25 सेंटीमीटर. एंड उसी तरीके से एक होता है फार पॉइंट ऑफ एन आई, कि द मैक्स લખવું નથી, ખાલી કહું છું. द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच वी कैन एबल टू सी, एंड दैट इज इंफिनिटी. बराबर. तो ये नॉर्मल पॉइंट आपको पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है. मतलब
आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो तो इफ यू एवर प्रैक्टिकली यूज्ड इट, तो आप जब उसको देखने के लिए, कोई चीज देखने के लिए उसको यूज करते हो तो भाई તમે આવી રીતના થોડું એને પોजीशन वेरी करो। वो पोजीशन वेरी आप इसलिए करते हो कि वो उसका जो इमेज, वो इमेज तो कहीं पे बना देगा आपको, लेकिन आपको दिखना चाहिए, वो आपको तभी दिखेगा कि वो जो 25 सेंटीमीटर या उसके ज्यादा डिस्टेंस पे बने, बिकॉज वी हैव यूज्ड द मिनिमम डिस्टेंस। वहां तक होना चाहिए, उसके नजदीक आ गया तो हमें नहीं दिखे। 25 के या इंफिनिटी में कहीं पे भी प्रोड्यूस हो गया तो दिख जाएगा, है ना। सो दैट्स अ नॉर्मल पॉइंट। अभी आप लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। लिखिए आप इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, लिखिए इट्स अ convex lens for which an object is placed at or slightly less than or slightly less distance than focal length, which produces its virtual, erect and magnified virtual, erect and magnified image। बराबर। तो पहले हमने कंडीशन डाल दिया, इसका यूज भी आ गया और क्या काम करता है ये भी पता चल गया हमें कि हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है कॉन्वेक्स लेंस में, आइदर फोकस पे या फिर फोकस से नजदीक थोड़ा रखना पड़ेगा, तो फिर वो आपका पर्पस सर्व करके आपको दे देगा, मतलब उसका मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना के आपको दे देगा, जिसके लिए आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। नाउ if you see that I have written that there are the two cases, either you can place a object at focus, so at focus માટે તો તમને ખબર છે, it produces image at, and the second you have written that it must be slightly less than that of focal length, that means it is between, जो हमने डिस्कस किया, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो फिर वो जो प्रोड्यूस करवाएगा वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करवाएगा। तो ये दोनों केसेस डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अलग अलग, और दोनों न्यूमेरिकल, मतलब टेक्स्ट बुक ने एक ही दिया है, हम दो करेंगे। तो केस 1 में हमने जहां पे लिखा कि आपका देखा जाए कि मैग्नीफाई करूं, जे આપણે यूज કરવું છે थोड़ा सा टॉपिक है वही करना है। चलिए, नाउ इज इट ओके? सो वी आर गोइंग टू पुट अ ऑब्जेक्ट for a convex lens which is between optical center O and focus F, बराबर है। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो स्लाइटली लेस डिस्टेंस है, कैन बी कंसिडर्ड एज फोकल लेंथ। थोड़ा ओछું છે પણ एप्रोक्सीमेटली इट कैन बी रिटन एज फोकल लेंथ। और ये जो इसका इमेज बना के देगा, वो इमेज कितने डिस्टेंस तक बनना चाहिए तो हमें दिखेगा, आपने लिखा इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड minimum up to 25 centimeter, so image must be at 25 centimeter। उससे आगे कहीं पे प्रोड्यूस होगा तो चलेगा, लेकिन 25 से नजदीक नहीं होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। लेट अस सी हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। वी आर यूजिंग अ सिंपल convex lens in which you are putting a object between optical center and focus। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, in between of that you are putting an object which is to be magnified, बराबर। you know the refraction by a
convex lens, the ray which is parallel to the principal axis get refracted to pass through focus, लेकिन second focus यहाँ से pass, तो ये इसका refracted ray हो गया. Another ray which is passing from the optical center get refracted in same direction. जैसे वहां पे center of curvature में होता है, इसमें यहाँ पे optical center. You can see that these two are a divergent ray which cannot meet at this side. So what you need to do that you have to extend the direction. You have to check where the image is produced at the same side where you have placed the object. ये object का height h है. इन दोनों को अगर आप extend करोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको ये image produce करके देंगे. You can see that this image is virtual because produced by divergent ray. आपको extend करना पड़ा तब जाके मिला. इससे बड़ा है तो मैग्निफाइड है, और इसका जो इमेज डिस्टेंस आना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 25 चलेगा, 25 से तो बड़ा ही होना चाहिए वरना काम नहीं होगा. एंड ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने कंसीडर किया है फोकल लेंथ से छोटा, लेकिन वी कंसीडर दिस एज एफ फोकल. गेटिंग विद दिस? हमें तो फाइंड करना है इसका मैग्निफिकेशन. सो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हो, इट्स अ सिंपल लेंस. मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज गिवन बाय वी बाय, बराबर. इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं. वी नो दैट लेंस फॉर्मूला आप जानते हो, 1 by v माइनस इज इक्वल टू, इसमें से मेरे को 1 by u चाहिए, तो 1 by v माइनस 1 by u इज 1 by, तो 1 by u इज, तो ये v को परेशान नहीं करूंगा, बाकी बचा 1 by u जो आपने मेरे को बोला 1 by u इज इक्वल टू 1 by v माइनस, so it will be 1 by v minus 1 by, you're getting with this? Very good. We take v inside this, so this will become, ये v के डिनोमिनेटर में v आ गया माइनस, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन के आ गया है. लेकिन आपको इसमें पता है कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो d तक आना चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर. वी आर कंसीडरिंग अ मिनिमम केस, तो मिनिमम 25 છે, એનાથી આગળ ક્યાંય બી જાય તો ચાલશે. so as we can put this v equal to, क्या रखना पड़ेगा? 25 नहीं, આપણે એને d, बट साइन कन्वेंशन भी रखना पड़ेगा ना. ना होशियार. सो दिस मैग्निफिकेशन विल बिकम 1, v की जगह पे माइनस d डालोगे तो प्लस d बाय, so this is the formula of a magnification, that but this is the formula of magnification of a simple microscope when you place a object. सेकंड केस बाकी है जिसमें हमने ऐसा बोला कि यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट आल्सो एट f. जब इमेज जाएगा तो फिर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आएगा वो हम देख, अब इतना लिख लीजिए. ये नोट्स में नहीं है डेरिवेशन, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा. Do it fast.
થોડું ધીમે બોલજો હા, બાકી આજુબાજુ વાળા વાતો ના સંભળાઈ જાય. Completed? एक पर्सन बोले तो भी चाहे. પેલું નવું નવું ક્લાસમાં આવવાનું મળ્યું હોય ને એટલે ઉત્સાહ વધારે હોય. એમને ઓછો થઈ ગયો. હવે યુઝ ટુ થઈ ગયા. सो न्यूमेरिकल में जब भी अभी ये केस आएगा कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आई विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज 1 + d बाय बराबर. तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. પછી ત્યારે એવું નહીં આ ક્યાંથી આવી ગયું. चलिए लिखिए सेकंड केस. બાકી છે? ચલો તો ફટાફટ એક જ વાર લખવાનું હા. Yes. Second case is that your object must be at focus. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, પછી याद आयो, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको आप फोकल लेंथ लिख सकते हैं. लेकिन आपको वो ऑब्जेक्ट को उतने ही डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा. एन ऑब्जेक्ट કહેવાય ક્યારે જ્યારે આપણને દેખાય, અને આપણને દેખાય ક્યારે ત્યારે એને 25 સેન્ટીમીટર પર રાખો. सो इट मींस इट मस्ट बी एट मिनिमम अप टू डी. उसके ज्यादा रखोगे तो दिखने ही वाला है, उससे नजदीक नहीं लेके आ सकते वरना ब्लर हो जाएगा. तो उसका जो इमेज मिलेगा दैट इज एट इंफिनिटी. तो ये इमेज डिस्टेंस को आप इंफिनिटी बोल सकते हो. बराबर. So in this case I am using a slightly different formula for magnification. Our intent is to find out the magnification is magnification का आपने जो formula पढ़ा है उसको बोलते हैं lateral magnification या linear magnification. The proper word is linear magnification because वो distance के term में आता है. जब आपने उसको define किया था then you have defined this as image height upon object height at a distance के बाद. So it's a linear magnification जो distance के term में होता है. There is other magnification also which is called angular magnification. जैसे linear magnification है वो distance के term में होता है, height के term में होता है, वैसे ही जो angular magnification होगा वो angles के term में होगा, इसलिए उसको angular magnification. तो जैसे हमने linear magnification बोला था image height upon object height, वैसे angular magnification को बोलेंगे angle subtended by image to the angle subtended by. ये भी हम यूज कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट है तब, बोलते हैं मैग्निफिकेशन ही है. तो इसके लिए हमारे पास दो एंगल होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का और एक. सो लेट अस डू दैट. Suppose that this is the object that we have placed in front of a convex lens. उसका ये इमेज मिल गया हमें, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर पे एक ही रे मिला. इमेज कहीं पे बनेगा इंफिनिटी पे, वो अभी इमेज में नहीं बता रहा हूँ. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका हाइट हमने लिया h. ऑब्जेक्ट को आपने कितने डिस्टेंस पे रखा था, तो ये डिस्टेंस हो गया आपके पास. ये ऑब्जेक्ट ने ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया. I have told you that we want angular magnification. Angular magnification मतलब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें से मिल जाएगा. ऑब्जेक्ट का हाइट h है, ये थीटा के लिए ये ऑपोजिट साइड है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f है वो इसके लिए एडजेसेंट साइड है. tan थीटा. सो वी कैन से दैट tan थीटा 0 या थीटा o, अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज h बाय, इसको रखते हैं अभी
एक काम हो गया है। दूसरा अभी एंगल ऑफ इमेज कितना प्रोड्यूस करता है, एंगल कितना प्रोड्यूस करता है वो मिल जाएगा, तो इसका रेशियो लेके हमारा काम हो जाएगा। सो सॉल्विंग फॉर विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है अभी? फोकस पे। इसलिए आप जानते हो कि उसका इमेज कहाँ पे बनता है। लेट अस ड्रॉ इट। ऐसा होता है कि नहीं कि ऐसे ही बात होती है। सो दिस इज अ फोकस वेयर यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे आगे जाएगा। वन रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड टू पास थ्रू फोकस। लेकिन अदर फोकस सेकंड फोकस बोलते हैं इसका। लेंस में दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बराबर। तो ये इसका रिफ्रेक्टेड रे हो गया। आर यू क्लियर विद दिस? अनदर रे which is passing from the optical center get refracted in same direction, बराबर। तो ये रे हो गया जो ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये दोनों रेस यहाँ पे कहीं पे आगे मिल पाते तो वहां पे इमेज प्रोड्यूस करवा सकते, पर वो रियल इन्वर्टेड होता, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये दोनों रेस को आप कितना भी एक्सटेंड करो कहीं पे मिलेंगे नहीं। सो द सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आता है जो आपने सीखा है कि इसको पीछे एक्सटेंड करो। पीछे भी अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ये दोनों रेस को, दे कैन नॉट मीट, मिलेंगे लेकिन बहुत आगे मिलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि उसका जो इमेज जाता है वो, so this image will be at infinity, कहीं पे आगे मिलेगा, बराबर। लेकिन हमने सेकंड कंडीशन में बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है वो फोकस पे रखा है, लेकिन वो फोकस ऐसा लेंस लेना पड़ेगा कि जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 से कम होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ना हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट नहीं जो तो इमेज जो शो का, बराबर। तो सपोज ये एंगल हो गया, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इसको मैं थीटा आई बोल देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा आई हो गया तो दिस आल्सो विल बी थीटा आई। यू गेटिंग विद दिस? ओके। ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है ना, पीछे जा रहा है। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, वो कितने डिस्टेंस पे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है जिसका इमेज कहीं पे पीछे जा रहा है। ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज था जो हमें चाहिए था, क्योंकि ये इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये रे जाके इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये थीटा आई हुआ तो ये थीटा आई हुआ। अब ये ऑर्डर में जाना, मैं तुमने कीधु रॉन्ग कहीं ત્યાં हुआ एम नहीं। इमेज नु एंगल थीटा आई છે એટલે આ थीटा आई तो, बराबर। अब ये ट्रायंगल आपके पास है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें tan थीटा आई चाहिए। तो tan थीटा आई दैट इज ऑपोजिट अपॉन ऑफ एडजेसेंट એવું મને ખબર છે, હું ભૂલી ગયો તો કદાચ યાદ નહીં। इट इज h बाय, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास दोनों एंगल आ गए, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। सो वी कैन डिफाइन अ टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन कॉल्ड, एंड वी डिफाइन द एंगुलर मैग्निफिकेशन एज, ये कहीं पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम लगेगा, है मैग्निफिकेशन ही। इट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज आपका आया अपॉन दिस इज, तो आपको ये m मिल जाएगा d बाय f बाय d આવશે। પહેલામાં આવતું હતું 1 प्लस d, हमारी लेवल भूल થઈ। हियर इट मस्ट बी f, फोकल लेंथ। तो ये हो जाएगा, एंड ये आपने ऑब्जेक्ट रखा कितने डिस्टेंस पे जो हम दिख पाए, 25 इज, सो फाइनली इट बिकम्स h बाय d, और यहाँ पे h बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट बिकम्स d बाय। So when you are having the object at the focus whose image is produced at, then the magnification will become, और वो जब आपने रखा था between optical and center and focus, जब आपका इमेज मिल रहा था वर्चुअली इरेक्ट, then it is, ये 1 निकल जाता है जब इमेज इंफिनिटी पे आता है। इमेज डिस्टेंस तो डी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट f इक्वल टू डी नहीं लिया है हमने, u इक्वल टू डी लिया है। कि जो ऑब्जेक्ट रखना है, आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है तो ऑब्जेक्ट रखना है वो 25 रखना है, 25 से नजदीक नहीं रह सकता। तो आपको ऐसा ही लेंस चूज करना पड़ेगा जिसका फोकल लेंथ f इज d, वो अप्रोक्सीमेशन, तू बोल रही हो बराबर, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन।
ચલિए આપણે બે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના, એક 1 પ્લસ અને એવું કહે કે ઇમેજ ઇઝ એટ ઇન્ફિનિટી ધેન ઇટ ઇઝ ये जितना अच्छे से पता चलेगा वैसा ही अच्छे से आपको इसके बाद के दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पता चलेंगे, कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ब्लूमेल આમાં તમારે બે ડાયાગ્રામ બનાવવા પડશે. લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર કોવિડ વાળું યર હતું ને 2 વર્ષ પહેલા, ત્યારે અમારે પેલા પેપર ચેકિંગ ફર્સ્ટ પાર્ટમાં થઈ ગયું, બટ ત્યારે લોકડાઉન આવ્યું, ફર્સ્ટ લોકડાઉન માર્ચ. હા ત્યારે અમારું 21 હતું ને, આઈ થિંક સો 2020. હા, ડ્યુરિંગ ધેટ અવર પેપર ચેકિંગ વોઝ ગોઈંગ ઓન, એટલે અમારું પેપર ચેકિંગ ચાલુ હતું. આઈ થિંક સો 3 to 4 days થઈ ગયા હતા, નકુલ સર સાથે જ હતા. 4 days થઈ ગયા હતા. નાઉ વી આર હેવિંગ અ ટાર્ગેટ એવરી યર કે જે બી ડિસ્ટ્રિક્ટના પેપર આવતા, સો આઈ થિંક સો that year 4,800 papers are there who has to be checked with us. બરાબર, મારો રોલ હવે મોડરેટર નો હોય, એટલે મારે ખાલી જે પેપર 45 અબવ જતા હોય 50 માંથી કે પછી 10 બિલો જતા હોય એને જ ખાલી ચેક કરવાનો હોય, બીજા મારે ચેક ના કરવાનો. હા, તો અડધા પેપર ચેક થઈ ગયા હતા, અડધા બાકી હતા. અડધા અરાઉન્ડ 3,000 જેવા થઈ ગયા હતા, 1,800 કે 2,000 જેવા અરાઉન્ડ ધેટ બાકી હતા. એટલે પછી પેપર ચેકિંગ બંધ થઈ ગયું. એ પેપર ચેકિંગ પાછું આવ્યું માર્ચ, લગભગ ના એપ્રિલ બી જતું રહ્યું હતું. આઈ થિંક સો જુલાઈ કે જૂન કે, હા જૂન કે જુલાઈમાં એ પેપર ચેકિંગ પાછું આવ્યું. હવે એટ ધેટ ટાઈમ એક પેપર આવ્યું મારી પાસે, ટીચર્સે ચેક કર્યું, નકુલ સર મારી ટીમમાં જ હતા, એટલે ધેટ 47.5 માર્ક થતા હતા. ક્યાંનું પેપર હોય અમને ના ખબર હોય, કારણ કે એમાં પેલા તમે બાર કોડ લગાવેલા હોય, એટલે વી ડોન્ટ નો કે ક્યાંનું પેપર હોય. એટલે મારે ચેક કરવાનું હોય, એમાં મારે જેટલા હજી કટ કરવાનું હોય પછી મારે આગળ કટ કરવાના. જો 45 અબવ રહે તો પછી આગળ હજી બી અમારી ઉપર કોઈ કોર્ડિનેટર એમની પાસે જાય, એ કટ કરે ને પછી ફાઇનલ માર્ક થાય. અને ઇન કેસ અગર હું 47.5 માંથી રિડ્યુસ કરીને 45 પર લાવી દઉં તો પછી આગળ ના જાય, એ પછી 44 માં ગણીને માર્ક એન્ટર થઈ જાય. એટલે મેં પાછું ચેક કર્યું, એટલે મેં 2-3 મિસ્ટેક ફરીથી કાઢી, એટલે અડધો માર્ક કટ થાય. સો ઇટ વિલ બી અરાઉન્ડ 46 જેવા થઈ જતા હતા હું ચેક. પછી મેં ફરીથી જોયું એકવાર, કારણ કે આવા પેપર મારે બી 2 વાર જોવું પડે, એટલે મેં ફરીથી જોયું.
મેં પાછું જોયું ને કે જેટલી મિસ્ટેક્સ હતી ને બધે નીચે એનાથી કરેક્શન લખેલા હતા કે સપોઝ અહીંયા મિસ્ટેક થઈ હોય કે tan theta i is same as theta i તો એને એવું લખી દીધું હોય tan theta i આ theta i લખવાનું ભૂલાઈ ગયું હોય it is h by f and right જ છે એમાં કઈ રોંગ નથી it's theta i by theta but we consider this as a mistake because we required theta and you are finding तो ये स्टेप लिखना जरूरी है इसका आधा मार्क कट होता है तो એવી એકાદ મિસ્ટેક હતી બે ત્રણ એ મેં કટ કરી દીધા હતા માર્ક બધા પછી કટ કરીને બી હું માર્ક ડાયરેક્ટ ના લગાવું પાછું એકવાર જોઉં પછી હું ફાઇનલ માર્ક રાખું કે અમારા મિસ્ટેક ના ચાલે અમારી મિસ્ટેક ના થવી જોઈએ એટલે મેં માર્ક કટ કરી પછી એને 46 સુધી પહોંચાડી દીધું હજી બી પછી એકવાર ચેક કરતો તો એ 45 બિલો જતું રહે પછી મેં કીધું ના હવે આટલી બધી મહેનત કરી હોય છોકરા છોકરીએ જેનું બી હોય તો જ 46 માર્ક આવે એટલે પછી મેં કીધું હવે કટ નથી કરવા જે થવું રાખી દઈએ ફરીથી મેં ચેક કર્યું મેં કીધું એવું ના થાય કે એ જે સ્ટુડન્ટ 46 લાવતો એ આવી મિસ્ટેક્સ ના કરે એટલે મેં ચેક કર્યું તો એ જ્યાં બી મિસ્ટેક થઈ હોય ને કે સપોઝ આ tan theta is theta એના નીચે એને લખી દીધું હતું કે અહીંયા હું લખવાનું ભૂલી ગયો છું tan theta કે ભૂલી ગઈ છું tan theta is theta બટ નીચે એને પેન્સિલ થી લખેલું હતું કે the proper step must be tan theta is equivalent to theta હવે એ તો ચેકિંગ માં ધ્યાન ના આવે અમારું અને પછી નીચે એકાદ વાર એવું લખેલું હતું કે સોરી ફોર ધીસ મિસ્ટેક જનરલી અમારા પાસે રૂલ એવો હોય if such paper comes પછી એના 50 out of 50 હોય કે 49 હોય કે 0 હોય કે 10 હોય આવા બધા વર્ડ્સ કંઈ બી લખેલા હોય તો અમે એને અમારા રૂલમાં એવું આવે કે હું એમાં સાઇન કરી દઉં એકવાર તો પછી એને 3 years બેન્ડ થઈ જાય એનું રિઝલ્ટ વેઇટિંગમાં મૂકી દે ફોર ધીસ યર કે આ પેપરમાં આવું કંઈક લખેલું છે એટલે વી હેવ ટુ કીપ ધીસ ફોર વેઇટિંગ પણ આજ સુધી મેં અમે કોઈ દિવસ એવું કર્યું નથી એવું કદાચ હોય તો અમે અમારી પાસે બી બ્લુ પેન હોય જ ને અમને યુઝ કરતા આવડતી હોય તો અમે એને રફ કરી દઈએ અને જવા દઈએ કે કોઈ 2 વર્ષથી કોઈ છોકરાઓ 11th 12th સાયન્સ લઈને ભણતા હોય કોઈક વાર કોઈક એવી કન્ડિશન બી હોય પહેલાથી સારું ભણાવે માર્ક ના આવ્યા હોય છેલ્લે ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સ બધાની અલગ અલગ હોય એટલે જનરલી એવા કેસમાં પછી બહુ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પર હોય તો પછી અમે એવું વેઇટિંગ પર મૂકી દઈએ કે બસ હવે આમાં સાઇન કરી દીધી એટલે એનું રિઝલ્ટ વેઇટિંગ એટલે હવે જો મેં કીધું કે આમાં સોરી લખેલું છે એક તો હું આગળ મોકલીશ તો પછી એને પાછા પ્રોબ્લેમ થાય એના બહુ બધા પછી એના કંઈક ફોર્મ ભરવાના હોય ને આ તેને બધું બીજું એ આપણે એવું નથી કરવું એટલે મેં પેન્સિલથી રફ કરી દીધું આવું મારે કહેવાય નહીં તમને કે પેન્સિલથી મેં રફ કરી દીધું ના ના એવું ના કરાય એ બી સમજાવું ઇરેઝર થી રફ કરું ને તો આગળના ટીચર ઓલરેડી જોયેલું હોય કે એમને મિસ્ટેક કરેલી હોય આ પેન્સિલ વાળું ક્યાંક ધ્યાનમાં આવ્યું હોય ને તો એમને રાઈટ કરેલા હોય જો હું એમાં ઉપર રફ કરું તો રેડ કલરનું જે માર્કિંગ હોય ને ત્યાં ઇરેઝર જાય ને તો એ પાછું સ્પ્રેડ થાય એટલે ખબર પડી જાય કે આ કોઈ ઇરેઝર એટલે મેં પાછું જાણી તો બાકી મને બી ખબર પડે ને ઇરેઝર થી રફ કરે એટલે મેં પાછું ઉપર પેન્સિલ થી રફ કર્યું એ થઈ ગયું પછી હવે એના માર્ક કટ કરવાના હવે લીગલી એવું છે કે પેન્સિલ વાળું આ જે અમે કન્સિડર ના કરીએ એટલે પછી મેં નકુલ સર વાત કરી મને કે સર લખ્યું તો સારું છે એટલે જેટલા માર્ક આવ્યા હોય તમે એ પછી મારા ઉપર હોય મારે જે કરવાનું એ મારા પર ડિપેન્ડ કરે મને કે શું કરીશું પછી મેં જોયું આગળ મેં કીધું લખ્યું તો બધામાં હતું એ પછી મેં લોજિકલી થિંકિંગ કર્યું કે આને પછીથી કેમ લખ્યું હોય પહેલાથી ખબર હોય તો એ ભૂલ ના થાય અને જો ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પછીથી એને કરેક્ટ ના કરે એટલે પછી મેં લોજિકલી થિંકિંગ કર્યું કે આવું કેમ થવું હશે એટલે પછી મને યાદ આવ્યું મેં કીધું જો એને લખતા રહે પેપર લખી દીધું હશે પછી છેલ્લે તમને 10 to 15 મિનિટ્સ બાકી રહે ત્યારે એને ફરીથી ચેક કરવું હશે અને ફરીથી ચેક કરવું હશે ત્યારે એને ખબર પડી હશે કે કઈ મારી મિસ્ટેક રહી ગઈ છે એટલે હું બેટર ત્યાં લખી દઉં છું પેન્સિલ એ આખું લોજિકલ થિંકિંગ મેં મારા દિમાગમાં ઉતાર્યું એટલે મેં કીધું ના મહેનત તો કરી છે એટલે પછી મેં શું કર્યું ત્યાં જેટલા બી હતા ને ત્યાં મેં રાઈટ કરી દીધા બધા કે આ બધું બરાબર છે કોઈ મિસ્ટેક છે નહીં મિસ્ટેક જેટલી હતી મેં કાઢી નાખી ધેન આઈ ગિવન 47.5 હતા એમાંથી મેં અડધો કટ કર્યો એટલે 47 માર્ક આ તમને કહેવાનો ઇન્ટેન્સ એના માટે કે while you are writing the paper આવું તમે ચેક કરો છો અને તમને બીજી વાર મિસ્ટેક રેક્ટિફાઈ થાય છે તો ડોન્ટ રાઇટ ઇટ વિથ ત્યાં ઉપર પેનથી રફ કરીને કરો કારણ કે બધા ટીચર્સમાં એવું ના હોય કે કારણ કે તમારા પેપર ક્યાં ચેકિંગ થવા જવાના એ કોઈને ખબર ના હોય બરાબર ડિફરન્ટ ધીસ ગોઝ બિયોન્ડ 45 એટલે હવે તમારે પેલા 45 અબવ લાવવા પડે એટલે આવું થાય क्या कट करके 3-4 बार करना पड़ता એ બધી બહુ મિસ્ટેક્સ હોય અમે જોયું પછી અમે એટલું બધું રેક્ટિફાઈ ના કરે એટલું સારું આવતું બી થોડું ચેક કરે चलिए नेक्स्ट
Last, second, compound microscope. Write it down fast. Compound microscope. देखो, it's इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर आपको मैग्निफिकेशन मिलता है वो लिमिटेड मिलता है. If you want the things to be still magnified more, ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, then you cannot use this simple microscope. In that case, you have to use this compound microscope. बराबर, आप बायोलॉजी स्टूडेंट से वो माइक्रोस्कोप यूज करते, फिजिक्स में भी आएगा प्रैक्टिकल में. देखिए, इट्स अ सिस्टम ऑफ two convex lenses. Two convex lenses. A lens placed, next statement. A lens placed near to object. Near to object is called. શું કહેવાય? બડા શું ઓબ્જેક્ટ ની બાજુમાં જે લેન્સ રાખ્યો હોય, it's called objective. And the lens placed near to eye is called, it's called an eyepiece. 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 एक ऑब्जेक्टिव हो, एक eyepiece हो. Yes, next. बच्चा कंटिन्यूटी ब्रेक करो भाई, मतलब नेक्स्ट पॉइंट. An object is placed in front of objective whose image is produced near to focus of eyepiece. Comma, this eyepiece will produce its final virtual, erect and magnified image. Virtual, erect and magnified image. अगर सिंपली आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझना है तो इसमें से आप ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दीजिए. अगर ऑब्जेक्टिव लेंस हट गया तो वो सिंपल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हो गया. और सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसके लिए आपने ऑब्जेक्ट को जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखा होता है तो वो उसका वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होता है. लेकिन हमें क्या करना था कि उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट था वही छोटा था, तो इसका इमेज मैग्निफाइड करके मिल रहा था लेकिन इतना मैग्निफाई करके नहीं मिल रहा. तो हमने क्या कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट के सामने एक और एक लेंस रख दिया, जिसको हमने बोला वो उसका मैग्निफाई इमेज बना के देगा. जो आपने लिखा कि you place the object in front of objective which produces its image, but that image is produced in a way that comes between the optical center and focus of. तो वो आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो थोड़ा ऑलरेडी मैग्नीफाई करके आया है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होके तो आया है फर्स्ट लेंस से, फिर आईपीस से वो उसको और बड़ा करेगा and finally you get this virtual, erect and magnified image. This is double process. पहला ऑब्जेक्टिव, उसके लिए ऑब्जेक्ट, उसका इमेज, that image becomes an object for and the eyepiece produces its final image. बराबर. तो वो जो मैग्निफिकेशन कम मिल रहा था, ऑब्जेक्ट छोटा था जिसमें मैग्निफिकेशन कम मिल रहा था, वो डिफिकल्टी आपने रिमूव कर दिया बाय प्लेसिंग एन एडिशनल लेंस. अब ये एडिशनल लेंस है, वो दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें भी कंडीशन है
कि if FO is the focal length of objective, and FE is the focal length of eyepiece. Both of them are the convex lens, but for this system of two convex lens to behave like a compound microscope, the required condition is FE must be greater than eyepiece है वो ऑब्जेक्टिव से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सिस्टम एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिहेव करेगा. मोस्ट टाइम पे इसका डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन में तो 2-3 स्टेप ही है. मेन है इसका डायग्राम, मैं ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा फिर ड्रॉ कीजिएगा. सो वी आर यूजिंग द टू lenses, one is objective and another is eyepiece. Objective eyepiece से छोटा होना चाहिए, say for that this is an objective lens. इससे थोड़ा दूर आपने एक दूसरा लेंस रखा है, that's an eyepiece. The common thing is that both of them should have same principal axis. The optical centers must be on the same principal axis. ये objective हो गया. मैंने जैसे बोला था कि लेंस के लिए 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक, तो फिर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इसका इमेज कहाँ पे बनाएगा वो पहले हम देखते हैं, बिकॉज दैट इमेज बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस. बराबर. वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्रेक्टेड टू पास थ्रू फोकस किसका, ऑब्जेक्ट. But that is the second focus. એટલે આ જે distance થયું, that is a distance between the optical center and focus of, इसको हमने बोला FO. ठीक है. The another ray which is passing from the optical center get refracted in same direction. ये इसका real inverted थोड़ा magnified image बनाएगा, and that image becomes an, पर ये जो image इसका बना, मोस्ट टाइम पे थिंग है कि ये दोनों के बीच पे आप डिस्टेंस जो सेट करोगे वो ऐसा करोगे कि ये जो इमेज इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट मस्ट बी नियर टू दी इट्स फर्स्ट फोकस. એના फोकस ની આજુબાજુ આવવું જોઈએ, बिकॉज वी नो दैट आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में सीखा, आपके पास 2 ही केस है जिसमें आपको फाइनल इमेज मिलेगा, आइदर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट और इट मस्ट बी बिटवीन O and, तो F ની આજુબાજુ જ રહેવું જોઈએ, એની આગળ ના જતું રહેવું જોઈએ, बिकॉज एक ही केस में वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है जब वो ऑप्टिकल सेंटर और आने तमे थोड़ું આ બાજુ લઈ લીધું, बराबर. सो दिस इमेज बिकम्स बियॉन्ड F, तो फिर तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करे, वो नहीं होना चाहिए. मतलब मैं सेट करवानी है फोकल लेंथ. अभी इसमें से ये जो 2 रेज आएंगे वो कहीं पे मिलेंगे, वो इसका इमेज प्रोड्यूस करवाएंगे. ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको क्या करवाएगा, कन्वर्ज करवाएगा. ये यहाँ पे आगे तो कहीं पे मिल नहीं पाएंगे, because they are the divergent rays. So what you need to do is that you have to extend them in. तो यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करवाएंगे, and this is the final image which is produced. You can say that the magnification. बराबर है. तो अगर ये H है, ये इसका H डैश हुआ और ये इसका H डबल डैश हुआ, जो फाइनल इमेज है वो तो इससे भी लार्ज मिलेगा. बट the second thing is that you kept this object for this lens, इसको भूल जाओ. ये लेंस के लिए आपने ये जो ऑब्जेक्ट इसका हुआ H डैश, इसको रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. जब आप लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो, उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलता है, लेकिन कहां पे मिलता है, फर्स्ट केस ऑफ योर सिंपल माइक्रोस्कोप, it must be at a distance up to D. Yes, बराबर. वरना तो दूसरा केस तो इंफिनिटी वाला ही है. एंड व्हेन इसका फोकल लेंथ है FE, इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस बना दैट मस्ट बी मिनिमम D. इमेज है वो इंफिनिटी पे नहीं बना है, तो इसका मैग्निफिकेशन आएगा. The first case of your simple microscope, when the object is between O and F, तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M is equal to, तो ये खबर पड़े तो आ खबर पड़े, એટલે ક્યારે કીધું તો કે બરાબર સમજો તો જ આ ખબર પડશે. तो इसका तो मैग्निफिकेशन आपको मिल गया. अभी इसका मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा बिकॉज इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 lenses. आपको मैंने बताया था कि when there is a system of 2 lenses, when you want to find out the overall magnification,
देन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट पहले इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करो, इसका तो जो अभी हमने डिस्कस किया, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करो, देन यू गेट अ फाइनल मैग्निफिकेशन। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको कितना मैग्निफिकेशन देगा वो पता चले, बराबर। सेकंड थिंग इज दैट ये डायग्राम में आप ये एक डिस्टेंस देख सकते हैं, ये डिस्टेंस, कैन यू सी इट? इसको अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो दिस इज द सेकंड फोकस ऑफ एंड दिस इज द फर्स्ट फोकस ऑफ एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, जिसको हमने एल बोला। सो दिस एल इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस ऑफ, सेकंड फोकस बोलने का मीनिंग है बिकॉज ये रही साइड पे आया, एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ, इसमें टोटली 3 डिस्टेंस आते हैं, 4, FO L FE, इसका हाइट, इसका एच डैश, इसका एच डबल डैश, एंड फाइनल इमेज मस्ट बी एट डी। यू गेटिंग विद दिस, राइट? पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। ड्रॉ बराबर करजो, એવું હોય તો બુક ને થોડી હોરિઝોન્ટલ કરીને પછી ડ્રો કરજો। અગર ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ માં ના આવે તો આને ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં। યોર ઇમેજ મસ્ટ બી ઇન ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂ। ના આવી ડિઝાઇન થોડી કરી દેજો। नहीं ये तो ऑब्जेक्ट का वो बोला है, फोकस पे नहीं, फोकस से थोड़े आगे जाए, फोकस पे आगे जाएगा तो ही उसका रियल इन्वर्टेड आएगा ना, वरना तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। फोकस के फोकस के अंदर ना जाऊ, जेनी बहार जाऊ જોઈએ તો જ रियल इन्वर्टेड થાય। શાંતિથી ડ્રો કરો, ઇટ વિલ ટેક 5 to 10 મિનિટ્સ ટુ ડ્રો, હા એટલું ઇઝીલી નહીં થાય। આની એક હિન્ટ બી આપું તમને, મેં જ્યારે ડ્રો કર્યું હોય ત્યારે તમે ધ્યાનથી જોયું હોય ને તો આ ડિસ્ટન્સમાં પહેલાથી નહોતા મૂક્યા, જ્યાં મળતા હતા ને પછી ડિસ્ટન્સ રાખતો ગયો। પહેલા તમે ડિસ્ટન્સ રાખો ને તો મળે જ નહીં કોઈ દાડો, એ ડિસ્ટન્સ પછી લખવાના। એ ક્રોસ જશે, પેલું વાળું નીચે જશે ને બીજું વાળું ઉપર જશે, ક્રોસ જશે, આવી રીતે જશે અને આવી રીતે જશે, પછી એ બે રીતે કન્વર્ટ થશે ને પછી પાછળ જશે।
એ વાળું એ જે રે છે એ ઉપર જશે અને આ વાળું નીચે જશે, તો ભૂલ ત્યાં કરે છે. જવા દો જવા દો જવા લેન્સ સુધી જવા દો. હવે પેલા ઉપર બસ એનું પતી ગયું. હવે પેલા રે એની ઉપર આવશે થોડું. જવા દો જાઓ. હવે બે નામ કન્વર્ટ કરે. થયું. ઘણા લોકો છે ને આ ઓબ્જેક્ટ આટલું મોટું બનાવી દે અને લેન્સ એટલો નાનો હોય એટલે આ રેઝ આવે ને બહાર નીકળી જાય લેન્સ. એટલે ઓબ્જેક્ટ નાનું રાખવાનું, લેન્સ મોટો રાખવાનો, તો આ રેઝ આમ જ જશે, બાકી તો પછી કન્વર્ટ ક્યાંથી કરાવવાના. સર યસ સર L કયું ડિસ્ટન્સ બતાવે છે? L is a distance between the second focus of objective, मतलब ये मैंने जो यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट किया है, एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस, मतलब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको L बोलते हैं. Getting with this? ओके यस लिखिए, चलिए आगे. પછી ड्रॉ करजो शांति थी राखी थी. आप पहले कैपिटल L का इंफॉर्मेशन लिख लीजिए. कैपिटल L is called a distance between. Capital L is called काढ़ी नाखो. Capital L is a distance between, बाकी प्रॉपर इंग्लिश नहीं है. L is a distance between second focus of and first focus of, बराबर, second focus of objective and first focus of. चलिए हम इसको डिराइव कर देते हैं. मैग्निफिकेशन मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है कि मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए, एक मैग्निफिकेशन आईपीस का होना चाहिए. देन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस. बाय मेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू यू गेट अ फाइनल मैग्निफिकेशन जो मेरे को चाहिए. शांति. चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं. ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है और इमेज का हाइट. मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ. तो मैग्निफिकेशन फॉर दिस ऑब्जेक्टिव इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इट इज एच डैश अपॉन. अब ये फाइंड करने का मैं आगे प्रोसीजर कर रहा हूं. बी केयरफुल. इफ दिस एंगल आई टू कंसीडर एज बीटा, चेक इट. तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं. ये हाइट कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया और ये डिस्टेंस कितना है. गेटिंग विद दिस. तो ये ट्रायंगल में से मैं ऐसा बोल सकता हूं tan बीटा इज अपोजिट इज h अपॉन ऑफ एडजेसेंट, दैट इज. तो पहले आप ऐसा लिख सकते हो कि tan बीटा इज h अपॉन ऑफ, where FO is the focal length of object. You agree with me? अभी एक h मिल गया, वो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा h डैश लाना पड़ेगा ना. तो h डैश आ जाए, ऐसा एक ट्रायंगल ले लो. अगर ये एंगल बीटा है तो इसको मैं भी बीटा बोल सकता हूँ. यस. तो अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा,
ये एंगल बीटा हो गया, दिस इज, इसको अगर आप ऑलमोस्ट कंसीडर करोगे तो ये एल हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप टेन बीटा अप्लाई करोगे तो टेन बीटा इज 10 beta is also can be written as h dash upon of, दोनों 10 बीटा है, so we can write down that h by fo can be written as h dash by, हमें क्या चाहिए, so इसमें से h dash by h फाइंड करोगे, so it can be written as l by f, हमारी भूल, it is l by, and hence the magnification of objective can be written as, l का इंफॉर्मेशन आपने लिखा, बराबर है। ये तो एक मैग्निफिकेशन आया है जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है। ये डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको समझ में आए इसलिए ड्रॉ करके दिया। दूसरा मैग्निफिकेशन किसके पास जाने का, तो कैन आई से दैट फॉर आईपीस, आईपीस में तो आपको दो ही बात ध्यान रखनी है कि आईपीस इज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, जिसके लिए जो ऑब्जेक्ट आया दैट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आया, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, लेकिन इसका फोकस मतलब एफ, और इसका जो इमेज बना दैट इमेज इज ऑलमोस्ट v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे बना। तो ऐसा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में फर्स्ट केस किया था, तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा था m इज 1 प्लस, लेकिन यहाँ पे f का नाम बदल के हो जाएगा 1 प्लस d बाय, यू गेटिंग विद दिस। अगर यही इमेज इंफिनिटी पे मिल रहा होता तो ये फॉर्मूला हो जाता, वेरी गुड, so it is magnification of eyepiece, and so that these two lenses are in combination, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आएगा इसका, जो हमने पहले ही बताया था कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज m is equal to magnification of objective into magnification of, for that being we required the magnification of objective, we already find out in equation 1 which is l by, and into इसका मैग्निफिकेशन 1 प्लस d by, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन, if v is equal to infinity, image is infinity, then this magnification will become l by fo into, so आपको न्यूमेरिकल में चेक करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इंफिनिटी पे है कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ आई है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा, राइट इट। अप्रोक्सीमेशन की दो आप, we try to deliver this in a way that कि जो स्टूडेंट को फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है उसको भी ये समझ में आए, that efforts we are putting, that you can see। तो ये एफर्ट्स का रिजल्ट कितना मिलता है वो तो फिर आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। पर वी ट्राई, હું તો એવી રીતે જ સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું કોઈ બી ટીચર કે જે એવરેજ સ્ટુડન્ટ બી હોય એને બી ખબર પડવી જોઈએ કે અમે શું કર્યું, મેજિક ના લાગવું જોઈએ, તમે મેજિક જોવાના પૈસા નથી આપતા, બરાબર, you are paying for what, that you get the best education. but if you want to make it magic, then some of you are there, એને ગમે એટલું કરાવો બધું મેજિક જ લાગે, આ ધ્યાન ના રાખો તો મેજિક જ લાગે ને, શું ચાલુ ક્યાંથી કરવાનું, અહીંથી ભાઈ જો, હા યાર ચલો ફાઇનલ આન્સર, હા उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन एल लिया है, टन बी एफ, वो डिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं लेकिन जनरल एम उसका एल में।
असाइनमेंट ના બાકી તો ના મારે થોડું તમને કહેવાનું બી છે. ઓ ભાઈ આવું કઈ આપ્યું છે તમને? ઓ આ असाइनमेंट તમને સોल्व કરવા માટે આપ્યું છે. ये बुक 1 खत्म हो गया. कब का? बुक 2 के 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया. 9 कंप्लीट होने आया है. यू आर इन 12th स्टैंडर्ड. एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना, या कोई टीचर्स को नहीं देना है. बट स्टिल यू हैव हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग. सर करावे तो हमें करिए, बाकी नहीं. ये प्रैक्टिस आपको खुद करना है. इसमें से डाउट पूछना होता है, दैट इज अ प्रॉपर मेथड. પણ डाउट्स तो આપણે બધા જ હોય છે કારણ કે આપણે કરતા જ નથી. बराबर. स्टिल अगर कोई स्टूडेंट इसको रीड करता है, सॉल्व करने का ट्राई करता है, 10 क्वेश्चन ट्राई करे और 10 में से 10 नहीं आएंगे तो हम करवाएंगे. लेकिन आपको रीड ही नहीं करना है, ट्राई ही नहीं करना है, फिर आप बोलते हो कि हमारे एमसीक्यू में मार्क अच्छे नहीं आते हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम. 10 एमसीक्यू માંથી 10 એ 10 नहीं आवड़े तो અમે કરાઈશું, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ એટલીસ્ટ તમે 10 રીડ કરવાની હેબિટ રાખો. ત્યાં સુધી તો અમે જ કરાયા છે બધા, તમે તો જાતે કર્યા જ નથી. જોયું બી નહીં હોય જ્યાં સુધી અમે કીધું ત્યાં સુધી. એ ચેપ્ટર 9 પતાવ્યું, એમસીક્યુ જોજો, ચેક કરજો, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ થોડા ક્વેશ્ચન ટીક કરાવું છું. યુ હેવ ટુ સોલ્વ ઇટ એન્ડ યુ હેવ ટુ આસ્ક ડાઉટ ફ્રોમ ઇટ. બરાબર. नकुल सर કેટલા કરાયા? 1 2 એ બી અડધાને ખબર નહીં હોય.